वेरी हाई तो सही केस रे तमे गोटे पैसिव इम्यूनाइजेशन भी नहीं जाई परिबो। बहुत बतिला विषय। हाँ, जानता हूँ। माने मेन जिनिस कौन हुए तो सही केस रे माने गोटे पैसिव इम्यूनाइजेशन भी नहीं जीवो। तो दो आमे वैक्सीन नहीं चे दो हमारा बॉडी फाइट करिवो बट it may actually be better to take passive immunization also তাহলে কোন হবো ডবল প্রোটেকশন ହେଇଯିବ ঠিক है ना କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଫାଇଟ୍ କରିବ ତମର ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ହେଲା ପାସିଭ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ବି ହେଇଯିବ ବୁଝିଗଲ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍स ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପାସିଭ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟେଟାନସ୍ ଟକ୍ସଏଡ୍ and गोटे होची एक्टिव इम्यूनाइजेशन ताकि कुआ जाए कौन टीपीटी वैक्सीन हे गला डिप्थेरिया परटुसिस एंड टिटेनस वैक्सीन ओके चलो सो प्लीज रिमेंबर एथरे टिटेनस से कौन कौन हमको मन रखार अछि हमको मन रखार अछि पैथोजेन क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी कॉमन नेम होची लॉकजॉ काहेकि जॉ मसल टा होची स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी तो सी जदि लॉक कर दो तब फिटे वाला किए नहीं प्लस तमर जो वैक्सीन गोटे होची डीपीटी हैला डीपीटी वैक्सीन एटा होची कौन एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड टेटनस टॉक्सॉइड एटा होची पैसिव इम्यूनाइजेशन तो दी प्रकार वैक्सीन दिया जाए क्लियर नेक्स्ट तापरे हमर डिजीज होची कौन निमोनिया निमोनिया अगेन वी हैव डिस्कस इट इज अ लंग डिसऑर्डर तो से इथरे कौन हुए लिम्फ एंड म्यूकस हमर लंग्स भितरे जमा हो जाए ओके एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स रे तो ताको हमें कहू पानी भर्ती है हैला तो पानी भर्ती है गला कहू एंड तो जदी लंग्स रे लिम्फ म्यूकस जमा हो जीवो ताले गैस एक्सचेंज हबन तो इट सिवियरली अफेक्ट्स गैस एक्सचेंज ठीक अछि तो सेई पे दिस इज डेंजरस तो निमोनिया रा भी वैक्सीन अछि हम पाखरे निमोकोकल वैक्सीन एंड इट इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनिया एबे ई नाटा चेंज हे गेलानी तमे आकु आ जगह रे तमे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखिबो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हला तो आगो ताको डिप्लोकोकस कुआ जाउतला तापर न्यूमोकोकस कुआ गला एबे ताको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पैथोजेन कुआ जाउछि अंडरस्टूड so it is again it infects the lower respiratory tract especially lungs तो जो थे तमरो lymphatic fluid mucus जमी जाए तो सही पे गैस एक्सचेंज कम बिकॉज़ हमें जानी छे कौन कि लंग्स रा एल्वियोलाई सरफेस एरिया को बहुत बढ़े दिया किंतु जदि से एल्वियोलाई भीतर ही म्यूकस भर्ती हो जीवो ताले आ गैस एक्सचेंज कम क्लियर then another disease is plague very dangerous disease plague भी मारात्मक रूप से स्प्रेड करतिला in the past and this plague is characterized by high fever and a bubo in the groin or armpit plague is caused तो pathogen किए plague रा Yersinia pestis which is a deadly bacteria तो सीए ए डिजीज टाकू कॉज करूची एंड आपको स्प्रेड किमती करिवो तो प्लेग इज स्प्रेड बाय रैट फ्ली तो रैट फ्ली ता ना कौन जिनोप्सिला चियोप्सिस हैला जिनोप्सिला चियोप्सिस
तो एटा होची रैट फ्ली। तो से माने एटा परसेंट टू परसेंट स्प्रेड करती। लोक कहते ना मूषा कामुड़ी देले रोग हो, मूषा कामुड़े रोग हम। मूषा देह जो रैट फ्ली अच्छी सी तुमको कामुड़े कौन हम, इट विल कॉज द फीवर, इट विल कॉज द स्प्रेड ऑफ फीवर। तो से पे मैन टू मैन इन्फेक्शन केमिति हुए, विद द हेल्प ऑफ रैट। ठीक अछि ना। तो से पे हमर तार जो डेंजरस फॉर्म टाको बुबोनिक प्लेग कुहा जाय। ओके, सो सेई पे सब बेले एरियाज गुडा को रैट फ्री रखिबा उचित हैला। नेक्स्ट डिजीज इज टीबी। टीबी और ट्यूबरकुलोसिस ताकू आमे कहू तो पैथोजेन को ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हेगला। ताकू कॉक्स डिजीज कुआ जाय। हमर रॉबर्ट कॉक इज ए फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट, तांको ना ऊपर ट्यूबरकुलोसिस को कॉक्स डिजीज भी कुआ जाय। ओके, तो सी गोटे टॉक्सिन प्रोड्यूस करे विच इज अ वैक्स कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन। तो ये ट्यूबरकुलिन जदि कांटेक्ट रे आसीबो ताले ट्यूबरकुलोसिस हो। सिम्पटम्स होची लंग इन्फेक्शन आर हाई फीवर, कोल्ड, ब्लड containing sputum, pain in the chest, etc. लिख दरा। तापर लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव फैटिग एरा सब कॉमन साइन सब मस्त करता है। फेलियर ऑफ एपेटाइट, स्लाइट राइज इन टेम्परेचर एंड ए सब जिंस हमर हम। ठीक अछि। तो टीबी पे भी आमे वैक्सीन नहीं जाउछु बहुत अर्ली स्टेज रे। तो अर्ली स्टेज रे को वैक्सीन दिया जाए, बीसीजी। व्हाट इज बीसीजी? बैसिलस कैलमेट एंड ग्रुएरिन। ओके, बैसिलस कैलमेटे ग्रुएरिन। तो कैलमेटे ग्रुएरिन, ठीक अच्छे। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो यहाँ भी छोट बहुत अर्ली स्टेज है, माने तुम फर्स्ट वैक्सीन मानकर दिया है जाए तुम ओपीवी या आईपीवी या बीसीजी, तापर डीपीटी, एमएमआर, टीपीटी ये सब आरंभ हो। ओके, जो छुआ बहुत छोट थे। तापर पळे आसीबो लेप्रोसी या हैंसेन्स डिजीज, आउ गोटे माइकोबैक्टीरियम डिजीज हैला। तो ट्यूबरकुलोसिस भी माइकोबैक्टीरियम डिजीज एंड लेप्रोसी भी माइकोबैक्टीरियम डिजीज। तो आपको कुआ जाए माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक अछि, या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस भी कुआ जाए। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो से कौन करिवो, सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हैंसेन। ठीक अछि, एते स्किन रे लाइट पैचेस हे जीवो एंड नर्व लॉस हे जीवो से जगह। ठीक अछि, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी। नाउ एथरे सीरियस कंडीशन रे टोज डिफॉर्मेशन हे जाए, झड़ी जाए, अंगूठी भी झड़ी जाए देहरु। ओके, द लिव्स द रेस्पिरेस द बैसिलस लिव्स बाय कोन स्प्रेड केमती हबो, बाय नोज। ठीक अछि। तो जो माने भी नोज रु इन्फेक्शन भावे जो लेप्रोसी रा चांसेस हला। तो डिफॉर्मिटी द बैसिलस लीव्स द बॉडी इन नाजल डिस्चार्ज, ता संगे कफ, स्नीजिंग या कथा लाल को जो ताकर सालिवा पड़िबो सेइदा भी तमन पार्ट रे पस गेले डिजीज हे जिवा चांस। तो मु ऑलमोस्ट बहुत गुड डिजीज डिस्कस कर दोची। एनसीईआरटी रे 2-4 डिजीज अछि, एटा तम माने देखि दे परिबो। ओके, ना आमर गोटे आसीजिव डिजीज मलेरिया। तो मलेरिया टाकू टिके बढ़िया रे डिस्कस करिवा हमें। विल डिस्कस मलेरिया। तो आई विल टेक यू टू अनदर। तो आगा हम किसी जिनिस लिखि देबा। तो एठी देखछो एटा तमर देइछि ड्राइंग टा, एटा सिंपल एनसीईआरटी ड्राइंग टा अछि। ओके, तो सेटा मु टिके तुमको आउटी एलाबोरेटली एक्सप्लेन कर देबी। फाइन।
तो मलेरिया पैथोजेन ताको आमे नेक्स्ट क्लास रे टिके भलरे एक्सप्लेन करबा। तो मलेरिया इज बेसिकली ए प्रोटोजोअन डिसीज हे गेला। तो एटा होची प्रोटोजोअन डिसीज एंड वेरी कॉमन डिजीज। तो सेही पे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को इवन नोबेल प्राइज रे सम्मानित करा जायछि हैला। तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस तो he has been awarded Nobel Prize and जदि तमे nobelprize.org देखिबो सेइथरे he is said to be an Indian citizen. So it is a matter of pride for us that Dr. Ronald Ross को Nobel Prize दिया गला। ओके एंड 20th August एते किछि जिंस इंपोर्टेंट अछि। तो 20th August को हमें कोन कहउछु दैट इज कॉल्ड मस्कीटो डे और मलेरिया डे। ठीक है 20th August is called mosquito day or malaria day. Okay, so Ronald Ross was given Nobel Prize in 1902. So one of the earlier Nobel Prizes. ठीक ଅଛି। तो इथरे टिके हमें शेयर स्टॉप करिवा। विल गो टू अनदर स्क्रीन हैला। तो ताको डिस्कस करला परे हमें ए स्क्रीन को आस। So I hope you are able to see। तो हमें मलेरिया साइकिल को कौन करिवा हमें मलेरिया साइकिल को दी भाग रे डिवाइड करबा। So we will divide the malaria cycle in different stages. तो first stage टा हमें डिस्कस कर दबा। ओके सपोज एठी जीवा हमें। तो फर्स्ट हमें डिस्कस कर दबा। विल ड्रॉ ए लाइन हियर एक्चुअली। तो एपटे डिस्कस करिबा इन मस्कीटो एंड तळे डिस्कस करिबा इन ह्यूमन हला। तो डिजीज इन ह्यूमंस। तो तापर हमें कौन करिबा नाउ। तो हमर इन्फेक्शन कौन हबो तो मस्कीटो बाइट्स and releases sporozoids। Okay, mosquito bites and releases sporozoids into humans। Okay, via कौन तो it into humans by injecting their saliva। ହେଇଗଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଶାର ଯୋଉ ସ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ତ ମସ୍କିଟୋ ଭିତରେ କୀଟାଣୁ କଣ କରିବେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଅଛି ସିଏ ଯାଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଓକେ କଣ କରିବେ ତ ତାର ଯୋଉ ମସ୍କିଟୋ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ସାଲିଭରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସବୁ ତାର ସାଲିଭରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସେ ଯାଇକି ତାରକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରିବେ। ସେଇପାଇଁ ଯେବେ ମସ୍କିଟୋ ମଶା କାମୁଡିବ ଯେବେ ତମକୁ ତ କଣ ହଉଛି ସେ ସାଲାଇଭା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଯେବେ ସେ ସାଲାଇଭା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଟା ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଲେଖିଦବା। ତ ଏଥିରେ ଲେଖିଦବା ମସ୍କିଟୋ ओके मस्कीटो इन्फेक्ट या इंजेक्ट्स लिख दवा इंजेक्ट्स इट्स सैलिवा ओके इनटू द humans okay in order to suck blood without any tension। ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ମସ୍କିଟୋ ସାଲାଇଭା को हमें इंजेक्ट कर दवा
मस्किटो इंजेक्ट करिवो ताकि से आराम से बंद कर with it enter the कौन sporozoites. Sporozoites, what are sporozoites? Infective stages of plasmodium. Okay, infective stages of plasmodium. And this infective stage of plasmodium এটা হচ্ছে কোন এটা হচ্ছে নন ফিডিং স্টেজ ये খায়নি ओके ये नॉन फीडिंग स्टेज से फाइन सो एटा ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ତମର ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ତାପରେ କଣ ହବ ओके सो ताପରେ ଆମେ କଣ କରିବା sporozoid move in the blood तो sporozoid कौन करिवे से ब्लड रे बुलिवे and infect liver cells and start कौन and start कौन का कुआ जाए that is called pre erythrocytic साइजोगोनी ओके तो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी साइजोगोनी माने कौन इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल ओके इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैला नाउ तापर कौन हबो तापर ए जो लिवर सेल्स ओके हमें ए लिवर सेल्स को कौन करिबा ओके तो तापर जो ये गला ना नेक्स्ट कौन हमें लिख दबा तो इन द लिवर्स ओके as the liver cells okay as the liver cells yeah in the liver cells they undergo a sexual reproduction to produce okay to produce तो फर्स्ट स्टेज को कहा जाए क्रिप्टोजॉइट्स क्रिप्टोमेरोजॉइट्स ठीक अच्छी तो इन द लिवर सेल्स दे अंडरगो asexual reproduction to produce cryptomerozoites comma which are subsequently released ठीक अच्छी which are subsequently released तो थरे तमर तैयारी हेई गला तापर कौन हबो से आउ थरे रिलीज हेलो नाउ तापर कौन करिबा नाउ these cryptomerozoites these cells
then affect fresh liver cell to perform कौन एक्सोएरिथ्रोसाइटिक है तो these cells then affect fresh liver cells the fresh liver cells को affect करिवे to perform exoerythrocytic cycle ठीक अछि now एटा भी asexual reproduction after which they produce okay they produce कौन that is called metacryptomerozoites metacryptomerozoites ঠিক আছে these cells have कौन these cells have two options number one attack fresh liver cells okay attack fresh liver cells सबको ब्रैकेट कौन कुआ जीवा this is also called exoerythrocytic cytosol okay so exoerythrocytic ER1 exoerythrocytic cytosol ठीक अछि तो जदि से माने आउथरे लिवर सेल्स को अटैक करले ताकू एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइटोगेनिक कुआजिबो तापर नंबर 2 कोन हबो अटैक आरबीसीज ऑफ ब्लड हेरा तो आरबीसीज ऑफ ब्लड तो एटा कोन कुआजिबो दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी फाइन तो तमे जब फ्रेश लिवर सेल्स को अटैक करिवो ताले तमर कोन हबो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चलिवो फ्रेश ओके सो जब तापर अटैक जदी रेड ब्लड सेल्स को करला तो फ्रेश लिवर सेल्स को करले एक्सोएरिथ्रोसाइटिक आरबीसीज को अटैक करले कोन दैट विल बिकम योर एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हला नाउ तापर कोन हबो तापर हमें डिस्कस करिवा नेक्स्ट तो in the RBCs these cells modify to become spherical modify these cells modify to become spherical ହେଲା ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଇଛି in these cells they modify to become spherical they modify to become feeding stages ମାନେ आ पूर्व से माने खाऊ नथिले बट एबेटू खिया पिया आरंभ हवा तो they modify to become feeding stages ताको कोन कुआ जीवो ट्रोफोजॉइट so they are called trophozoites these cells eat hemoglobin
and they, okay, each cell, okay, these cells eat hemoglobin and they excrete कौन हिमोजॉइन ग्रेन्यूल ହେଲା they, okay, they excrete hemozoin granules. So these granules when fall in blood produce the symptoms of malaria. Okay, तो ସେମାନେ symptoms of malaria ତିଆରି କର. So ଏବେ granules, hemozoin granules when fall in blood produce symptoms of malaria. What are symptoms of malaria? Number one होची excessive chill. Okay, कौन नंबर वन होची टू करदवा. नंबर वन होची हाई फीवर, वेरी हाई फीवर. ओके, सबुठ प्लस वेरी हाई फीवर हबो. तापर कौन हबो वेरी हाई फीवर हो गला. तापर एक्सेसिव कौन तो एक्सेसिव वेरी हाई फीवर एक्सेसिव चिल ताको चिल कहते माने ठंडा हबो तापर गरम हबो तापर ठंडा हबो गरम हबो आ. सो वेरी हाई फीवर एंड एक्सेसिव चिल. ठीक अछि. नाउ आफ्टर feeding these cells कौन these cells also undergo कौन post erythrocytic cytosol. ओके, अंडरगो पोस्ट एरिथ्रो माने आरबीसी रे पसी गेला ना. पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन टू प्रोड्यूस, ओके, टू प्रोड्यूस कौन मेरोजॉइट्स. तो ये जो मेरोजॉइट्स है ना प्रोड्यूस करती. ठीक अछि. ए कौन सॉरी एटा एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन नॉट पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन हेगला. तो आरबीसी भीतर पशिबे सेठी तम निजर शेप चेंज करिवे, निजर नेचर चेंज करिवे, खाइबा पीबा करिवे. तापरे कौन ओके तापरे से माने डिवाइड करिवे साइजोगोनी एंड प्रोड्यूस मेरोजॉइट्स. तो एठु जो मेरोजॉइट्स बाहरिबो these merozoites have three options. है ना कोड़ा कोड़ा. नंबर वन infect new liver cell. ओके, infect new liver cells. तो जब न्यू लिवर सेल्स की इन्फेक्ट करिवे ताकू कौन कुआ जीवो पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन हेगला. तापर नंबर टू कौन करिवे इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज. इनफैक्ट न्यू आरबीसीज ହେଲା. ओके, तो एटा कौन कुआ जीवो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन.
ठीक अच्छे ताकू कह एरिथ्रोसाइटिक छाड़गनी। थर्ड ऑप्शन कौन? फाइन थर्ड ऑप्शन in the superficial blood. In the superficial blood, they undergo pre-gametogony. ओके pre-gametogony माने से गैमेट्स तैयारी करया पे होती है। क्लियर? बुझियला? तो से लिवर सेल्स पाखे दीटा ऑप्शन था, आइदर अफेक्ट न्यू लिवर सेल्स और आरबीसी। किंतु जो मेरोसोइड गुड़ा आरबीसी रु बाहरिबे तांका पाखे तीनटा ऑप्शन था, इनफेक्ट न्यू लिवर सेल्स, इनफेक्ट न्यू आरबीसी या इनफेक्ट कौन? इनफेक्ट योर सुपर go to superficial blood. Okay, and there they undergo pre-gametogony to for gametocytes. Okay, to for gametocytes bracket re which are picked up by कौन? Which are picked up by mosquito. ହେଇଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ମସ୍କିଟୋ ନେଇକି ପଳେଇବ। रेडी ହେଇଗଲା। तापर हमें कौन डिस्कस करिवा? सो तापर इन मस्किटो डिस्कस करिवा। इन मस्किटो कौन हबा? तो दी गैमेटोसाइट्स differentiate the gametocytes differentiate to produce कौन? The gametocyte differentiate to produce male and female gamete. Okay, male and female gamete. Then they तापर कौन हबो? गैमेट्स तैयारी गेला। Then they undergo fertilization to produce a zygote or ookinete. Okay, they produce a zygote or ookinete. This zygote starts to move and then starts to move and then settle in the stomach wall of the mosquito. Okay, stomach wall of the mosquito to produce a sporon. तो से sporon क्रिएट करिवो which undergoes कौन? स्पोरोगोनी। ହେଇଗଲା ତ ସିଏ ସ୍ପୋରୋଗୋନି ତାପରେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। Now sporozoites are formed and they migrate towards the salivary glands and infect it.
ओके इन्फेक्ट इट तो से सैलिवरी ग्लैंड्स को जाइए तो कौन करिवे ताकू इन्फेक्ट करिवे हला here they wait for the next bite ବୁଝିଗଲ ସେପାଇଁ ମଶା ଆଗ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଲିଭରକୁ ଯିବ ଲିଭରରୁ ଲିଭରକୁ ଯିବ ତାପରେ ଲିଭରରୁ କିଛି ସେଲ୍ସ ଆରବିସି ପଳେଇ ପାରନ୍ତି କିଛି ସେଲ୍ସ ଆଉଥରେ ଲିଭରକୁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆରବିସି ଗଲେ ସେ ତମର ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବେ ସେ ବ୍ରିଜରେ ସେମାନେ स्विम करके भी पड़ेबे कुआड़े तो भी मेल है तो भी फीमेल तो उधर जाकर क्या करेंगे एटी जाके से माने आरबीसीज को अफेक्ट करते हुए लीवर जेमिति से आरबीसीज को अफेक्ट करते हुए आरबीसीज रु से माने कौन करिवे so they will go and what so the आरबीसीज सेट जाके से माने ट्रोफोजॉइट हे जिवे ट्रोफोजॉइट हेला परे से हीमोग्लोबिन को खाइबो एंड हीमोजॉइन ग्रैन्युल्स प्रोड्यूस करिबो हीमोजॉइन ग्रैन्युल्स जेबे ब्लड को जिबे they will produce problem okay से माने रोग स्प्रेड कर माने they will produce the symptoms of malaria तो से पे जेते जेते थरो से आरबीसी रु बाहरिबे सेते सेते सेई दिन तमर सिम्पटम्स प्रोड्यूस हो तो मलेरिया रे सिम्पटम्स एवरी 2 दिन परे हेई पारे या 3 दिन परे हेई पारे जो थे सिम्पटम्स 2 दिन पर आसीबो एवरी थर्ड डे ताकू टर्शियन मलेरिया कहा जाए जो थे सिम्पटम्स एवरी फोर्थ डे आसीबो ताकू कोटिडियन मलेरिया कहा जाए हे गला तो टर्शियन मलेरिया एंड कोटिडियन मलेरिया ठीक अच्छे तापर आरबीसी जो माने बाहरले तांकर 3टा बाटा अछि इनफेक्ट न्यू आरबीसीज इनफेक्ट लिवर या गो टू दिस पेरिफेरल सर्कुलेशन सेटू तुमको मस्किटोस पिकअप करके नहीं अंडरस्टूड सो दिस इज द साइकिल दैट इज कॉल्ड द मलेरिया साइकिल हला तो एटा को हमें मलेरिया साइकिल कहबा तापरे हमर विल गो बैक सो ए जिनसरा से देखौची एठी तमे जदी हमें देखिबा एठी सो हियर तो एठी देखुछ तो से मस्किटो को बाइट कला से लिवर को गला लिवर रे जाय कि से स्पोरोजॉइट्स हेबे तो से तापरे आउटर फेस लिवर सेल्स को अटैक करिवे एमती साइकिल चलीबो तापर सेथुर किछि आरबीसी जाडू को जिवे आरबीसी को अफेक्ट करिवे आरबीसी को अफेक्ट करला परे से ट्रोफोजॉइट हे जिवो एंड से टू हीमोजॉइन ग्रैन्युल रिलीज हेबे हीमोजॉइन ग्रैन्युल टा सिम्पटम प्रोड्यूस करिवो तो आरबीसी जो बाहर ले 3 बाट अच्छी बैक टू लिवर बैक टू आरबीसी एंड गो टू दी सुपरफिशियल ब्लड सेठी जाई से गैमेटोगोनी करती एंड तम कौन तमर जो प्री गैमेटोसाइट तैयारी करती एंड ए जो प्री गैमेटोसाइट गुडा पळेबे कोठी की मस्किटो देह भीतर को एंड मस्किटो रे जाई से गैमेट्स तैयारी हेबे तांगर फर्टिलाइजेशन हबो तांगर फर्टिलाइजेशन हेला परे ओके से माने जाइगोट तैयारी करिवे जाइगोट आउ थरे डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल्स कर दबा एंड दे विल इन्फेक्ट ओके एंड दे विल देन ये कोना माने माने से जाई तमर जो सालिवरी ग्लैंड्स रे जाई बस हैला ए सॉरी गैमेट्स ता प्रोड्यूस हेबे जाइगोट जाई की स्टमक वाल रे बसिबो स्टमक वाल रे से स्पोरोगोनी करिवो स्पोरोगोनी रु स्पोरेट्स तैयार हेले स्पोरोजॉइट्स गुडा आउथरे डिवाइड करिकी ए कोन माइग्रेट करिवे से पळेबे तमर सैलिवरी ग्लैंड सेठी जाई की से माने वेट कर यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कांसेप्ट इज मन तांकर पूरा प्लान अछि पूरा केमिति कोन करिवे कोडा पर कोन हबो पूरा डेफिनाइट प्लान चला सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एटा टिके बेसी रोग रोग हे गेला लकु मुंडा भी रोग हे जाउछि ठीक है तो नेक्स्ट क्लास रे हमें आकु आगु को नेबा वी मे कंटिन्यू द डिस्कशन मलेरिया साइकिल आउथर दरकार पड़ले बुझे देबा तापरे वी विल गो टुवर्ड्स अदर डिजीज हैला तापरे डिजीज सरला पर
we will go for immune system concern. Ella. So that's all for today. So I am ending the meeting for all. Thank you for hearing. Well.